आज विजिलेंस सचेतनता सप्ताह पालन होगा। एथर थीम रही एक विकसित राष्ट्र दुर्नीतिमुक्त भारत। लोकसभा भवन रे आज ओडिशा विजिलेंस पक्षरु आयोजन होबाक राज्यस्तरीय कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मुख्य अतिथि भाव में जोग देउछंती एवं 70 लाख स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्य छात्र छात्री और राज्य सरकार क्षेत्राधिकारी माने एथिरे जोड़ी होउछंती। कविकुल मौली सुनंदन वंद्य भुवन विघोषित कीर्ति अनिंद्य धन्ये पुण्ये चिर शरण्ये जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। Thank you. May I now request Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik to administer the integrity pledge to all of us. I request all to please rise for taking the integrity pledge. You are requested to repeat the pledge line by line after it is being read out by the Honorable Chief Minister. Thank you. I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political, and social progress of our country. I believe that all stakeholders such as government, citizens and private sectors need to work together to eradicate corruption. I realize that every citizen should be vigilant and commit to higher standards, of honesty and integrity. At all times and support the fight against corruption. I therefore pledge to follow probity and rule of law in all walks of life. To neither take nor offer bribe, to perform all tasks in an honest and transparent manner, to act in public interest, to lead by example, exhibiting integrity in personal behavior, to report any incident of corruption to the appropriate agency. Thank you, sir. May I request Director Vigilance Shri Yashwant Kumar Jetwa to give his address, please. Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik, esteemed Chief Secretary, Development Commissioner, DGP, retired and serving government officers, distinguished guests and invitees, prize winners, ladies and gentlemen present here, and thousands of others who are joined online today with us through VC and live telecast. It gives me immense pleasure to welcome all of you
to the state-level function on the occasion of Vigilance Awareness Week 22. This observance and your presence here today renews our commitment to integrity, transparency, and accountability in public life. This week, we will all jointly raise our voice against corruption through campaign activities at Panchayat, block, district, and state level, involving all sections of society. Sir, over the years, Odisha Vigilance has been making consistent efforts in anti-corruption enforcement in line with your motto of zero tolerance to corruption. Your direction and consistent support has helped Odisha Vigilance augment its competence and capacity to deliver quality service to the people of Odisha. We now have a presence in all the districts of the state. A new vigilance division has come up in Rourkela. We have vigilance courts spread all across the state to exclusively try vigilance cases. We have special courts at Cuttack and Bhubaneswar for exclusive trial of disproportionate asset cases against persons holding high public and political office. Odisha High Court and the judiciary are helping us in expediting trials through recording of evidence of witnesses by video conferencing. We have a unique multidisciplinary setup comprising experts from various fields. We have a technical wing comprising engineers for technical evaluation of buildings and projects, a finance wing comprising bank officer, chartered accountant, Odisha Finance Service and OTAS officers to go into the depth of financial transactions in our investigations, a forest wing to deal exclusively with forest crimes and malpractices, a battery of lawyers and counsels to ensure effective prosecution of vigilance cases, a statistical wing, document examination cell, cyber cell, and so on. All these combine to support the executive wing of investigating officers. We also have an internal vigilance unit monitoring the work of all vigilance officers. With your support, sir, the State Vigilance Academy set up in 2018 has grown into a unique and vibrant academic platform for anti-corruption discourse in the state, and it is an example in the country. It provides training to officers of vigilance, officers of All India Service, State Civil Service in areas of anti-corruption, transparency, and good governance. Sir, we are increasingly prioritizing our efforts on detection and registration of high-value, quality cases, especially against senior functionaries, as well as on expeditious completion of investigations and close monitoring of prosecutions to enhance our conviction rates. This year, till the end of September, Odisha Vigilance has registered 219 cases against 393 persons, including 44 Group A officers and 40 Group B officers. During this period, charge sheets have been filed in 174 cases against 296 persons, including 28 Group A and 32 Group B officers. On the prosecution front, during last 5 years, 492 persons have been convicted in 411 cases in different vigilance courts, including 50 Group A officers, with a conviction rate around 50%. Especially, sir, during the last 1 year, Odisha Vigilance has detected and registered a number of high-value corruption cases, surpassing previous records. This includes detection of disproportionate assets amounting to 15 crore rupees in a single case, cash recovery of rupees 3.4 crore in a house search, and recovery of rupees 10 lakhs in a trap case. We believe that all this will have a significant impact and deterrence on corrupt practices. Sir, you would be happy to know that as per the recently published statistics of the National Crime Record Bureau in Crime in India 2021, Odisha Vigilance stands first in the detection of disproportionate asset cases in the entire country. Similarly, with registration of 75 cases on the allegation of criminal misconduct, Odisha Vigilance is second among all the states in the country. In all other major parameters,
tabulated by the National Crime Record Bureau, Odisha Vigilance is among the top performers in the country. Today, I would like to acknowledge the support rendered by all departments in taking prompt action against corrupt public servants. A public servant convicted on charges of corruption need to be dismissed as per the relevant service code. For retired public servants, action to stop pensions need to be taken under the pension rules. Regular departmental action need to be initiated against public servants involved in corruption cases. Sanction of prosecution need to be provided in a time-bound manner. And I am thankful that all department heads have expedited these actions. And I urge them today to continue doing so going forward. Sir, you have prioritized transparency in the 5T framework in order to achieve transformation in the spheres of development, welfare, and good governance. The Mo Sarkar model of feedback-based governance, while promoting behavior change and better service delivery among government officials, is also helping Odisha Vigilance in identifying hotspots of corruption for targeted enforcement. Since 2019, the government of Odisha has prematurely compulsorily retired 164 public servants, many of whom had corruption allegations against them. This has significantly strengthened the anti-corruption drive in the state. We all know that corruption impacts service delivery, impedes investments, fuels and perpetuates inequality. Weakens state institutions, breeds disillusionment with governance, and erodes trust in government. As a corollary to all, it can be inferred that a dime spent on tackling corruption can yield $1 in return by improving service delivery, fast-tracking investments, addressing inequalities and discontent, strengthening state institutions, and above all, raising people's trust in the government. Today on this occasion, I would want to thank you, sir, for your decisive leadership, for providing us an enabling environment for anti-corruption enforcement. Going forward, I want to assure you, sir, that Odisha Vigilance will not leave any stone unturned to carry out its designated functions in a professional, competent, and aggressive manner. Thank you, sir. Bande Utkal Janani. Jai Hind. Thank you, sir. Odisha Vigilance, under the guidance of Honorable Chief Minister, is making rapid strides in the field of anti-corruption work and ensuring the transparency. We are committed to achieving the transparency goals set by the Honorable Chief Minister, as well as raising the standards of our professional acumen. Here is a short audiovisual clip in this regard. सर नमस्कार नमस्कार सर मो काम केबे हबो सप्ताह लागिबो सर जल्दी काम हो पे किछि देबी विजिलेंस जालरे कार्यनिर्वाही जंतु आज खाली समय दियंतु आपण काम हेइ छिबो आम ओडिशा आज दुर्नीति को पराजित करुछि समाज को दुर्बल पंगु करिदेबा पई चेष्टारत व्यक्ति मानक उपरे अंकुश लगाइबा शासन करिबा और दंड देबा भली कामगुड़िक बेस सुदृढ़ भावरे करा जाउथिबा कारणरू आमे एक दुर्नीति मुक्त राज्य भावरे द्रुत अग्रसर हेउछु एसबु आम प्रिय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायकंकर दुर्नीति विरोधी जीरो टॉलरेंस नीति और ओडिशा विजिलेंस रो पारंगमता पई संभवपर होई परिछि देश में 1944 मसीह दुर्नीति निवारण संस्थार स्थापन होइथिला जहाँकि 1957 मसीह विजिलेंस नाम परिचित होइथिला एवं 1980 मसीह यह एक स्वतंत्र विभाग रे परिणत होइथिला वर्तमान राज्य सरकार प्रत्यक्ष तत्वावधान और संपूर्ण सहयोग रे ओडिशा विजिलेंस रो आधुनिकीकरण करा जाई एहार कार्यदक्षता वृद्धि पाइछि
हस्तलेखा फोरेन्सिक साइबर क्राइम आर्थिक परिसंख्यान और वैषयिक विशेषज्ञ भली विभिन्न प्रजुक्ति संपन्न मानव संबल विनियोग द्वारा बहुविध दक्षता संपन्न संस्था भाव में उभा होईछि ओडिशा भिजिलेंस 5T रो समस्त उपादान प्रयोग रे ओडिशा भिजिलेंस आम ओडिशा को दुर्नीति मुक्त राज्यर रूपांतरण पथरे आगे नेउछि। विगत 5 वर्ष भितर 411 मामला 492 जन को दंड विधान करी निज कार्यदक्षतार परिचय दे परिछि ओडिशा भिजिलेंस। भिजिलेंस मामला गुड़िकर शीघ्र निष्पत्ति पाई देश में प्रथम स्वतंत्र भिजिलेंस कोर्ट कटक और भुवनेश्वर प्रतिष्ठा करा जाइछि। प्राय 50% मामलार दंड विधान करा जाई ओडिशा भिजिलेंस देशर दुर्नीति निवारण क्षेत्र में होई परिछि अग्रणी। आय बहिर्भूत संपत्ति मामला अनुसंधान और पंजीकरण क्षेत्र में आम ओडिशा देश में सृष्टि करिछि एक स्वतंत्र परिचय। प्रथम भिजिलेंस एकेडमी प्रतिष्ठा करी भिजिलेंस अधिकारी सर्वभारतीय सेवा और राज्य सिविल सर्विस अधिकारी माननकु दुर्नीति निवारण क्षेत्र में प्रदान करा जाउछि सर्वाधुनिक तालीम। अन्याय अनीति दुर्नीतिर मूलोत्पाटन करने सह एक दुर्नीति मुक्त राज्य गढ़िबार महत् कामरे अहरह सेवा जारी रखिछि ओडिशा भिजिलेंस। जेकोसी समय दुर्नीति प्रतिरोध पाई जनसाधारण हेल्पलाइन नंबर 1064 किंबा निकटस्थ भिजिलेंस कार्यालयर साहाय्य नहीं पारिबे। प्रिय मुख्यमंत्री सुशासन जाग्रत प्रहरी भाव जनसाधारण आस्था भाजन होई सफलतार पाहाच परे पाहाच अतिक्रम करि चलिछि ओडिशा भिजिलेंस। Thank you. I now request respected Chief Secretary Odisha, Shri Sudesh Chandra Mahapatra, to kindly enlighten us. राज्य स्तरीय दुर्नीति निवारण सचेतनता सप्ताह राज्य स्तरीय उत्सवर मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचासीन और समस्त सहकर्मी बंधुगण, ए हॉल रे बसथिबा रिटायर्ड ऑफिसर्स और विभिन्न डिपार्टमेंट सीनियर सेक्रेटरीज और अन्य ऑफिसर बंधुगण, ओडिशार कोण अनुकोण जोड़ी होता वर्चुअल माध्यम हजार हजार संख्यार कर्मचारी विभिन्न ऑफिस आपण मन को समस्त को विजिलेंस अवेयरनेस वीक अवसर रे अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। आज गोटे ऐतिहासिक दिन माननीय मुख्यमंत्री प्रथम थर राज्यर हजार हजार ऑफिस प्राय लक्ष लक्ष कर्मचारी को आज जो प्लेज देइचंती सेटा गोटे बहुत बड़ वार्ता समस्त आपण जानते। माननीय मुख्यमंत्री सब कही आछंती जीरो टॉलरेंस टू करप्शन एवं गत किछि वर्ष भितर आपण देखिथिबे 5T एवं मो सरकार जो यूज करिके राज्य रे लार्ज स्केल रे ट्रांसपेरेंसी आना जाई परिछि। जते पब्लिक सर्विस अछि माननीय मुख्यमंत्री कहिसंती प्रत्येक सर्विस पाई कोनोसी सिटीजन को जमती कोनोसी ऑफिस को जीवा को पड़िबनी एवं ऑनलाइन माध्यम रे बा डोर डिलीवरी माध्यम रे सब सर्विस जमती जोगे दिया जाय परिबो। याकू आखिके रखिके प्रत्येक विभाग वर्तमान प्राय सब सर्विस ऑनलाइन माध्यम रे करूछन जमती पब्लिक इंटरफेस विभिन्न ऑफिस सहित बा ऑफिसर मान सहित रहिबनी एवं रिमोटली सब सर्विस समस्ते पाई परिबे। आपण माने विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन रो अचीवमेंट देखिले ओडिशा रो विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन भारत रे श्रेष्ठतम विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन भाव में प्रतिष्ठा लाभ करिछि एवं गत अनेक वर्ष धरी जो मान कंट्रीब्यूशन रही मु समस्त को अशेष धन्यवाद देवी। वर्तमान यह गोटे हाईली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भाव में गढ़ी उठी एथिरे सबु विभाग इंजीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर्स आईटी प्रोफेशनल्स फाइनेंस प्रोफेशनल्स सब प्रोफेशनल्स मान को नहीं वर्तमान गोटे बहुत भल इंस्टीट्यूशन भाव में भारत रे सारा भारत रे श्रेष्ठ स्थान अधिकार करिछि एवं जो विजिलेंस एकेडमी कराई सेटा बोधे वन ऑफ द फर्स्ट एकेडमी इंडिया रो जो थरे रेगुलरली से माने ऑफिसर्स मान को ट्रेनिंग दउचंदी विभिन्न डिपार्टमेंट रो सीबीओ अन्य ऑफिसर मान को मते ट्रेनिंग दउचंदी एवं आशा करछि तांकर जो प्रचेष्टा भविष्य रे हमें दुर्नीति को सब्सटेंशियली कमे दे परिबा हम राज्य रे।
प्रिवेंटिव विजिलेंस उपरे हमको बहुत जोर देवाक पड़ो कारण वर्तमान जिते केस आम डिटेक्ट करुचु मोस्टली डिसप्रपोर्शनेट एसेट एक्वायर कर सारा करप्शन हो सारा अनेक समय धरा हो किंतु प्रिवेंटिव विजिलेंस ताठू आहरी बेसी इंपोर्टेंट तेणु प्रत्येक विभाग जो सेक्रेटरीज और डायरेक्टर अन्य सीनियर अफसर मैंने अच्छा से अनुरोध करी विभाग रे इंटरनल विजिलेंस को जमी से स्ट्रेंथेन करेंगे एवं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग सब टाइमली डिस्पोजल हम प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इमिडिएटली करेंगे जितेबाला रिक्वेस्ट जाऊँगी एवं जो एग्रीड लिस्ट बा सस्पेक्ट लिस्ट सब करवा ऑफिसर मानकर कॉन्ट्रैक्टर मानकर अन्य समस्त जो मैंने डील कर गवर्नमेंट सहित यसबू करी आम विजिलेंस प्रिवेंटिव विजिलेंस को आहरी स्ट्रेंथेन कले करप्शन आम मूल उत्पाटन कर तेणु पुणी थे आपण मान समस्त को अनुरोध करी समस्ते जे जेकोसी ऑफिस रे थांतु ना कहीं छोट ऑफिस हो बा बड़ ऑफिस हो सबुठी आम ताकू लागू करें माननीय मुख्यमंत्री जो स्वप्न अच्छी ओडिशा रु दुर्नीति को मूलोत्पाटन करने आम साकार कर गत किछि वर्ष भीतर आप देखते बहुत सीनियर ऑफिसर मान को कंपलसरी रिटायरमेंट कर रिव्यू कर चाकरी बहिष्कार कराई 160 रु ऊर्ध्व ऑफिसर ता भीतर बहुत सीनियर ऑफिसर माने अच्छा डीएफओज एडिशनल एसपीज इंजीनियर्स सुपरिटेंडेंट इंजीनियर चीफ इंजीनियर तहसीलदार बहुत ऑफिसर मान को स्ट्रेट अवे विजिलेंस रो जो रिपोर्ट आम पाक बेसिस रे रिव्यू करके चाकरी इमिडिएटली कंपलसरी रिटायरमेंट दिखाई यार गोटे बहुत बड़ इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ुची लोक